After this blissful meditation, where we got connected with our own self, it's the union of yourself with your higher self. You start feeling that. It is very, very inevitable कि ये feeling आपको naturally आने लगती है. तो हमने आज कैसे start किया था? हम comfortably बैठे थे. हमने अपने आप को align किया था. Our head, our throat and our body, है ना? Comfortable बैठने के बाद हमने अपने साथ कनेक्ट कैसे किया था? मेडिटेशन से. हम आनापानासती मेडिटेशन जो रोहन जी ने बहुत ब्यूटीफुली कराया आज, हम एकदम अंदर तक चले गए और बिल्कुल भी कोई थॉट्स वगैरह रिड्यूस हो गए. राइट, दिस इज व्हाट वी डिड. And after meditation is what? And this is not the entire thing. Meditation is not the ultimate. These are all the processes. Why are we doing it? For our self-realization. We did not come here only to have breakfast, lunch, and dinner and to just go out, enjoy ourselves, and the rest of the week slog, work. सिर्फ ये करने के लिए नहीं आए हम. Oh, just give me a second. I have not switched on my battery and it's running down. Just give me 1 second. There you are. This is what happens when you change your positions. I did not want to go to the basement today. I was a little unwell. Anyway, so हम यही बात कर रहे थे कि हम meditation करने के बाद we are in a better position to be connected with ourselves and then ponder. Did we really come only just to eat our 3 meals a day, make money and take care of our basic needs and that's it? So ये तो I think सब animals भी कर लेते हैं. They also get their food somehow. In fact, वो हमारी तरह इतना worry भी नहीं करनी पड़ती. They get their food, Divine ने जो भी organisms, जो भी living beings आए हैं planet पे, they all know how to take care of themselves. And trust me, they know how to take care of themselves better than what we take care of ourselves. वो कहते हैं ना कि, oh, we have to save the planet, save the planet. I think it's such a big mockery. Who the hell are we to save the planet or save the soil? हमें निकाल दो planet से, everything is going to take care of itself. Basically, we have messed up everything here. अगर आप history देखें planet की, it's been more than 200 I think million years जब से planet बना है और organisms आए हैं. हमें आया तो hardly 100,000 years हुए हैं. We have come and created a mess here. So you remove us, planet is good to go. So please stop saying this, save the planet. We are not saving the planet. We are just saving ourselves. So it is just a selfish ego which does not let us permit that कि हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, because जो सब हमने create कर दिया, we will not be able to survive longer. Okay, so that's my realization. So I've stopped saying save the planet. I say save yourself. Okay, that's more important now. तो अब आज जो verses हम करने वाले हैं, this is the book we are following. This is the perennial psychology of Bhagwad Gita. It has become one of my favorite now. We are going to do verse number 55, right, Menka ma'am? 55. Yes, 55 and 56. 55 and 56. So I'm just sharing the screen. These are very sweet and very profound verses. It's visible to everyone? Yes. Yes. Okay. So we've been talking about the self a lot today. And trust me, honestly, it is just coincidence that मैंने अब बाद में देखा कि हमारे verses का भी meaning कुछ वहीं जा रहा है. So this is what the इतना beauty है about this text also. जो आप ढूंढ रहे होते हैं ना, जो आपके thought process में होता है, वही आपके सामने आ जाता है. And it's been happening very often with me now. So I was so happy to see कि हम वही verses touch करने वाले हैं जो चीज हम थोड़ा realize अब आजकल करते जा रहे हैं. Yes, Menka ma'am. Divine morning, all the divines. अभी हम कर रहे हैं अध्याय 2 जो है ज्ञान योग. इसमें हमने पहले देखा था आत्मा का ज्ञान, फिर इसमें है कर्म का और बुद्धि का ज्ञान. आत्मा के ज्ञान में हमने देखा था कि आत्मा निरंतर है, शाश्वत है,
अजन्मा है। जन्म और मृत्यु तो इस शरीर का होता है। फिर हमने देखा था कर्म का ज्ञान, कि कर्म करने पे हमारा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। और कर्म फल का उद्देश्य रखते हुए भी हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट जो श्लोक है 248 जो हमने लास्ट वीक किए थे, उसमें हमने देखा था कि आसक्ति को त्याग कर समभाव में रह के कर्म करना चाहिए। कर्म फल हमारा अच्छा हो या बुरा हो, उसमें हमें न तो खुश होना है और न ही दुखी होना है। उसे ही समत्व योग कहा जाता है। फिर 250 में हमने देखा था बुद्धि युक्तो, मतलब जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म को छोड़ देता है। कर्म छोड़ देता है मतलब कर्म वो निरंतर करता है, कर्म फल छोड़ देता है। वो कर्म की शुरुआत सिर्फ डिवाइन कर्म करना है, वैसे ही वो कर्म करता है। इसलिए सदैव योग में स्थित रहना चाहिए। योग कर्मशु कौशलम, कि कर्म में कुशलता ही योग है। और अब आज का जो श्लोक है 255, इसमें बुद्धि का ज्ञान दे रहे हैं भगवान, कि एक ज्ञानी की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। ये बुद्धि का ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि मनोगतान जो निरंतर मन को गति देता है। और मन को गति कौन देता है? हमारी कामनाएं, डिजायर, वो हमेशा मन को गतिमान रखती है। तो जो साधक इस गतिमान मन को, जो गति देने वाली इच्छाएं और कामनाएं हैं, उन्हें संपूर्ण रूप से त्याग देता है और आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। और वो कैसे रहते हैं? जब हम ये जान जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम ये मन भी नहीं हैं, हम एक दिव्य चेतना है। जब हम एक हायर प्लेन में चले जाते हैं तो हम फिर लोअर प्लेन में गति नहीं करते हैं और हम अपने आत्मा से ही संतुष्ट रहना सीख लेते हैं। इसे ही स्थिर प्रज्ञस्त दोच्यते, ऐसे साधक को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इसमें एक है कि हमारी इच्छाएं और एक होती है हमारी आवश्यकताएं। इच्छाएं हमारी होती है मन के लेवल पे और आवश्यकताएं होती है शरीर के लेवल पे। हमारे शरीर को चाहिए भोजन, भोजन सादा उच्च सात्विक होना चाहिए, लेकिन उसमें हमें चाहिए स्पाइस चाहिए, उसमें स्वीट चाहिए, उसमें कुछ चाट चाहिए। तो वो सब हो गया हमारी डिजायर। तो उस समय में देखना चाहिए कि हम कहाँ स्थित हैं। जैसे शरीर को हमें कपड़े चाहिए, लेकिन कपड़े हमें ये ब्रांड के चाहिए, ये फैशन का चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो हम हो गए फिर से डिजायर, मन के लेवल पे आ जाते हैं। तो ये हमें अपने आप को समय समय पे एक रिकॉल रीचेक करते रहना चाहिए कि हम इस समय कौन से प्लेन पे हैं, और अपने आप को हायर प्लेन में शिफ्ट करना चाहिए कि हम एक दिव्य चेतना है और दिव्य चेतना को महसूस करते हुए स्थिर प्रज्ञ बने। यस जसवीर मैम। Yes, ma'am. So beautifully explained. Actually, I'm missing my friend Sanjana ma'am. वो आज थोड़ा सा occupied है. जगदीशा भी नहीं है. So I really don't know. I'm not wise enough really to add much, but फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी. तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैम, इसमें जो मैंने स्वामी रामा से पढ़ा है, it says when one entirely abandons all the desires that come into the mind, O son of Prithas, satisfied within the self by the self, then he is called a person of stable wisdom. तो stable wisdom उसका कब है? जब हम अपनी desires को
कंट्रोल हम हमारी मर्जी से हम अपनी डिजायर्स को करें, नॉट वाइस वर्सा. हमें जीना छोड़ने ही देना है. वी आर नॉट गोइंग टू रन टू द हिमालयस और समथिंग, बट व्हेन वी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, दैट वी शुड बी एबल टू रेगुलेट rather than the requirement regulating us. Most of the time it is the requirement which regulates us. Today I have this car, tomorrow I need that car. So that car is making me drive, कि अब मेरे को और strive करना है, I have to get that. So he says, when the aspirant realizes that the external world is but a reflection of the ultimate reality, and that although the reflection appears to be real, it is not actually so. अगर आपको याद है जो फर्स्ट वीडियो हमने किया था आर्किटेक्चर ऑफ भगवद गीता, लास्ट स्टेज व्हेन आई सेड दैट हमारी इग्नोरेंस हैज टू बी बैनिश्ड, तो वो क्लियर वाटर है, हमारे थॉट्स सब क्लियर है, शांत है, बट वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज द रिफ्लेक्शन और वेदर इट इज द रियल, तो दैट उसको हमें कैसे करना है? विजडम से. विजडम कहाँ से आएगी? बाय गेनिंग नॉलेज. हाउ डू वी गेन नॉलेज? By sitting together and discussing, reading good books and sharing our knowledge. जो हमें एक दूसरे को समझ में आया, we share with each other. So that is how we will be able to then find out कि ये reflection है कि real है, right? तो वो हमारी wisdom तब gain होगी. That is the ultimate aim of the Bhagwad Gita. First was अपने सब trash निकालना, the Arshad Vargas, which I said. Then was to stable your mind by meditation. And third is removing all the ignorance by wisdom, right? That's what we are doing now. So he thus experiences the first important step of freedom in the journey to the timeless infinity. Such a one, following the way of inward experience, finally attains contentment, for he knows the self. Then you come to know yourself. जो हम बाहर ढूंढ रहे थे, हमने वो कचरा वचरा, that debris सब हटा दिया. Then what you were looking outside was inside. यहाँ पे भी वो कह रहा ना, well, you can start by getting the hell out of my sun. That sun is already inside us. वो उसके आगे हमने पता नहीं क्या क्या ढक रखा है उससे. The self is known by the self and not through any other means. Please mark this, not by any other means. कितने भी आप पूजा पाठ कर लें, कितने भी आप रिचुअल्स कर लें, कितने भी आप पिलग्रिमेज चले जाएं, वो सब कैटलिस्ट हो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आप ढूंढ रहे हैं दैट इज इनसाइड यू. वो ढूंढने के लिए यू आर डूइंग ऑल दैट, बट मिलेगा वो आपको आपके अंदर. सो सेंसिबल वो है जो स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जर्नी पे जाए एंड ट्राई टू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग आउटसाइड इनसाइड यू, राइट? है वो अंदर ही. आप चाहे यूं घूम घूम के आ जाए, या आप डायरेक्टली यू गो जर्नी विद इन, दैट्स टोटली अप टू यू. When one makes practical use of this knowledge, he attains a state of non-attachment and is no longer bound by likes, dislikes, hatred, or lust. So these are all the lower limiting emotions जो हम बात करते हैं डेविड हॉकिंस के चार्ट में. Then one is free from all emotions, desires, and appetites. जो अभी मैम ने बोला, we need food, of course, for the body, but the entire day is not focused on what to eat, Mostly our entire day, half the time goes in what to eat. आपने कुछ ऑर्डर भी करना हो, the whole family sometimes spends 1 hour just to decide what to get, from where to get. Everybody reviews, पढ़ेंगे this. Also, we are spending so much of energy and time on just that. We do need it, but yes, don't give so much of energy, and energy हमारी limited है. We are spending all that energy in just to decide what we really want to eat. Okay, and this freedom is very valuable in the path of perfection. There is no power that can take this awareness away from him. A person who is now in union with his self will be able to overcome all these limiting desires, all these emotions, everything, and be connected with his own self. He will not feel guilty for saying no, right? आपका कुछ planned है, कुछ session planned है, you just want to spend time with yourself, sitting and reading some book, and suddenly your friend says, oh, we are coming over. Do you have the guts to tell that person, no, I have my day planned today, dude, you should have told me yesterday. Suddenly you can't just disturb my day. But we don't have that because हम लोग stuck है उसमें, oh, what will that person think? तो हमने जो सब अपना plan किया तो उसको backstage करते हैं. And we give undue importance to people who are not really helping us to grow. So become selfish, as I say in a very crude way. थोड़ा पहले अपने आप की पहले सोचिए.
right? If you have nothing planned, fine, you have time, of course, spend with your friends, with your family. That's important. Now my family has come to terms with it, na, कि morning time मेरे को देना ही है अपने आप को. So nobody is disturbing me. So you have to make your importance felt, right? Okay, enough with that. We go to the next one. This is 56. Nature of a stable person. So हम अपना self check litmus test कैसे करेंगे? Yes, man, come on. दुःखे स्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधिरमुनिरुच्यते. दुःखेष्वनुद्विग्नमना, जो मन से दुख के टाइम में उद्विग्न नहीं होता है. उद्विग्न मतलब विचलित नहीं होता है. जब हम कभी भी दुख होता है तो हम बहुत विचार करने लग जाते हैं, मन में अलग अलग धारणाएं उत्पन्न होने लग जाती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और सुखेषु विगतस्पृह, सुख में भी और अधिक लालसा नहीं रखनी चाहिए कि ये सुख है जो अभी हमारा बना रहे, या ये हमें अगेन अगेन मिलता रहे, ये सुख हमारे जीवन में निरंतर रहे. ऐसा भी नहीं सोचना है. वीत राग भय क्रोधा, जो राग मतलब प्रेम, आसक्ति, चाहे वो आसक्ति है, भय है, दुख है, इन सब से मुक्त हो चुका है. स्थिर धीर मुनि रुच्यते, ऐसे मुनि को, ऐसे साधक को स्थिर मुनि कहा जाता है. मुनि मतलब मौन हो गया है. और मौन कैसा मौन? सिर्फ बोलने से मौन नहीं, अपने अंतर मन से मौन हो गया है, अपने विचारों से जिसने अपने आप को मौन कर लिया है, ऐसा मौन व्यक्ति ही स्थिर हो जाता है. जो कभी भी दुख में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता है, अरे मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया है, जो आया है उसे शांति से स्वीकार करता है. और सुख भी आया है, उसमें भी वो समभाव में रहता है, उसमें भी बहुत ज्यादा सुख को अनुभव नहीं करता है, शांत रहता है. और अपने भय और क्रोध से भी मुक्त हो गया है. जैसी भी परिस्थिति आती है, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट मोमेंट. जैसा है उसे एज इट इज हम एक्सेप्ट करते हैं. उसे मुनि कहा जाता है, स्थिर मुनि कहा जाता है. और ये सब कुछ होता है जो पहले श्लोक में भी था, इसमें भी था कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना, स्थिर होना. ये सभी कुछ अभी जसवीर मैडम ने भी एक्सेप्ट किया कि हम कहाँ पे भी घूम के आ जाए, हमें आना लास्ट में मेडिटेशन में ही है. और ये स्थिरता है, अपनी आत्मा से संतुष्ट होना है, ये सभी हमें अपनी मेडिटेशन के द्वारा ही मिलता है. यस जसवीर मैम. Yes, ma'am. So nature of a stable person. अब जैसे हम जो meditation करी, we are feeling very peaceful. 1 घंटा बहुत अच्छा लग रहा है. Now the whole day we have to check, keep checking, check. जैसे अपना ही check करना है. No one is going to tell us, okay? Because the minute we'll start getting angry, at least we will get angry if something is not happening the way we want. Abhi, we will definitely feel upset. But the same minute, just tell yourself, is this what I was aiming at? My aim was to stay stable. So I'm not being stable, so come back. So it's like a self-check. Apna litmus test हमें खुद करते रहना है, right? Nobody should tell us, अरा बड़े meditation करते हो, अभी तो तुम you're again losing your cool. तो ये दूसरा ना बोले, we should be able to say this to ourselves. So for this verse, what Swami Rama says is, only a skilled and disciplined aspirant can understand the expressions, ideas, speech, and action of the realized one who has attained the state of equanimity. Equanimity means, again, that we are stable, whether it is we are up or down, we are there, like, which is very, very difficult, अभी हमारे तरीके से लाइफ चल रही है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत बात भी कर सकते हैं कि we are stable. The test comes when you face some problem. That's the time you're going to understand
How many of us start cursing ourselves, cursing our time, cursing people, cursing our seniors, cursing our juniors, someone or the other for something if it has gone wrong, right? But we have to realize that कुछ भी हो जाए, हमें अब आ गई है problem. Now what to do? तो जितना आप stable रहेंगे, you will be able to find a solution. जितना panic में आएंगे, the problem is going to become worse. It's not helping at all. Okay? So, the first and foremost sign one notices in such a person is the tranquility of his mind, wo peace mein hai, which is totally without desire, right? Such a person is an example to others. He lives as though he were in a glass house from which he can see everyone and everyone can see him. That way of living, being is attained through a gradual sadhana in which the aspirant first learns to choose helpful thoughts, emotions and desires. So this is the state we are in. हम वो बार-बार डेविड हॉकिन का चार्ट देखते हैं. इसमें से हमें कौन से emotions choose करने हैं? Do you want to be in happiness, joy, or do you want to be in anger and frustration? I'm sure nobody willingly chooses to be in anger. वो हमारी body हमें control कर जा, हमारे emotions हमें control कर जाते हैं. You know, we are always living in that emotional body. The emotions control us. They make our thoughts. Then yesterday, I just heard somewhere, I was listening to Yogananda's videos, his talks. See, he says, thoughts condense to become material. जो आपके thoughts हैं, वही thoughts आपकी life में reality में बन जाएंगे. So that is how we create our own reality. Our thoughts will condense into material. जैसे water vapor condenses to become water droplets. So thoughts also condense. तो वही तो हम पढ़ते हैं ना, कि हमारे thoughts में हम बोलते हैं ना, in our mental planes, all the thoughts and all are controlled by the desires, and that is what we attract in our physical body. So if they're negative, they block our energy system, and that makes our physical body get into trouble. So everything is almost the same. So Yogananda basically is the one who promoted all these learnings from the Bhagwad Gita, from the Patanjali to the West, which he calls Kriya Yoga. Kriya Yoga is exactly the same thing. You know, taking care of your body with a few asanas, pranayam, sitting into meditation, and then self-realization. This is, again, the three concepts together. That is what is Kriya Yoga is. So all the learnings from our Bhagwad Gita, Patanjali, he took to the West. So he's written a very profound book, Autobiography of a Yogi, which I think is a must for everybody to read if you really want to understand how he has taken all this Eastern philosophies to the West. So people who are on this path now, I would suggest next you should get this book, Autobiography of a Yogi, and it's beautiful, and you'll understand so many concepts which you are listening, which are new to you. तो ये हमारे ही सारे उपनिषद्स में से है, वेदांता में से है, which have been brought into limelight to the West by Paramahansa Yogananda. Okay. So I think we have understood this also now. Desires have their origin in the primitive fountains of food, sex, sleep, and self-preservation. So यही basic desires होती है हमारी. When one learns to regulate these primitive fountains, desires lose their powers over him. So desires have to lose their power over us. It has to be other way around. We should know when we want to eat. We should be able to know when we want to go out. People are forcing us, we don't want to, or just for the society's sake, hum kar rahe hain certain things. So we are never going to be at peace with ourselves. So I think this much is enough. And aaj ke liye, though the next one is very nice, but wo to hum fir next Sunday karenge, maine kaha ma'am. I think the next one is ये भी बहुत अच्छा है, tortoise I would वाला. like to add in the previous Yes, one. sure, As please. Sir says, right? So basically, we should learn to culture our lower self with our higher self, because that's all about, we get attached to our desires, right? We are always having a question, how to overcome the desires, how to... Where have you gone? 1 minute. You just add yourself. Okay, I'll add. Yeah. Okay, yeah. Yeah, so what I was saying is you need to culture our lower self with our higher self, basically. Yeah. वही तो कर रहे हैं हम. This is the process, exactly. self-culture. Yeah. Exactly. The more we imbibe the higher qualities,
of love, compassion, learning, that's when we will learn to overcome our desires. We'll go past them. Absolutely. And these things come naturally also. ये भी आप देखो जरा, आप step wise, जैसे अब wisdom की भी बातें हो गई. Next, automatically, compassion, love, and gratitude walks in automatically. We have made that path for it. वो automatically आता है. You immediately get into that gratitude mode, that you have to express gratitude to yourself. You become aware about your body organs only, जो हम पहले taken for granted था. Your feet are taking you around, your hands are making you work, you're seeing, you're talking, everything. We take it so for granted. But there's so many people who are not blessed enough to have all these, blessings in their life. So you tend to start expressing gratitude for people in your life. हम हमेशा सब में fault ढूंढते हैं, the person, when you get married, we think, oh, one thing we have got, अब इसको हमें change करना है, like it's like a project, we have to change our partner. That's such a wrong approach to begin with. Yeah, and then it's very important to learn acceptance for everyone. Yeah, acceptance comes, gratitude comes, and that love and compassion, as you said, little plants in meditation. आप बोल रहे थे ना, get little plant. Earlier, we never used to notice them, and now automatically, the minute I walk out of the gate, I give a smile to the plants. I actually have started even saying bye to them. See you in the afternoon. That kind of a thing, because आपको लग रहा है कि they are looking at you, they can hear you, they can feel you, and it's actually true. Animals की तो खैर बात ही छोड़ दो, वो तो they are much, that way more compassionate than us. But even plants now we see, they have emotions. So yes, start talking to your plants. Also on this greed and desires, as we always hear, the universe has enough for our needs, but not for our greeds. Not for our greeds. So हमारी तो फिर limitless रहती है ना desire. तभी तो गड़बड़ होती है. That is when I said कि planet से human beings को हटा दो, planet will save itself. तो spoil ही हमने किया because हमारी greed इतनी है, we want everything for ourselves. And we always get what we need and what we deserve. Yeah, absolutely. वो तो है. वो चीज हम भूल ही जाते हैं कि we didn't first self check तो करो. Do you really deserve what you're aspiring? हमें चाहिए तो सब कुछ है. We need designations, we need power, we need everything. But just close your eyes and see. Do you really deserve it? Have you reached there? Have you crossed those lower three, hurdles of your life? जो cleansing करनी थी, have you done that? Have you reached where you are in a position to start getting now? So, because what you give, you're going to get back. Simple as that. This is simple rules. आप ball ऊपर फेंकेंगे, वो नीचे आएगी. Boomerang, it's going to come back. So, like whatever you're giving out, you are getting it back. And people who are not behaving well with you, they are mirror reflections of what you have inside you. So, घूम घुमा के सब self realization है. It is the self to the self, and meditation is helping us. So I think meditation हमें इस चीज में बहुत हेल्प करता है, बहुत क्लियरिटी भी देता है कि हमें क्या करना चाहिए. और कुछ समय हम अपने आप के साथ में भी बैठते हैं, जो हमें थॉट आ रहे हैं वो, या जैसे इवनिंग में सर जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि डेली शाम को एक बार अपने साथ में बैठो और ये सोचो कि आज दिन में आप सबने क्या सोचा, क्या किया, कैसे थॉट्स रहे. तो वो जैसे हमें रियलाइज करता है कि आज हम कौन से प्लेन पे रहे, मन के लेवल पे हम कितने रहे, विचारों के लेवल पे हम कितने रहे, और हम अपने आप में कितने रहे, अपनी आत्मा में कितनी देर स्थित रहे. ये बहुत अच्छा है कि अपने आप के साथ में बैठना और अपने को ही खुद को रीड करना. yes. तो इसी के लिए मैम हम लोग जैसे स्कूल में मेरी कलीग्स हैं यहाँ पे बहुत सारी समय, तो वी कीप मेंटेन अ लिटिल रजिस्टर जिसमें हम अपने आप को ग्रेड करते रहते हैं. टुडे इज 10 आउट ऑफ, आफ्टरनून आई टेल देम जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिट. अपने मार्क्स खुद को दो कि टुडे डिड यू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जो आप अपने आप में चाहते हैं. हैव यू डन दैट टू द बेस्ट? Is it 6 out of 10, 7 out of 10, 10 out? Sometimes I also close my eyes and I give myself just a 5 or 4. मैंने आज complete नहीं किया what I wanted to do. So होता है, we do have those days, So वो self-awareness is the only key of taking you ahead.
This is my realization. Anybody wants बट to आप share? अपने आप को चेक कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है. चेक Yeah, करते ये हैं, check तभी हम हम जब हायर प्लेन में पहुंचते हैं. यस मैम, तो वो कहते हैं ना कि जो आपकी सिचुएशन है सब कुछ छोड़ के भागना नहीं है. वी आर टीचर्स, सो हमें चेकिंग करना बहुत अच्छा आता है. तो वी लाइक टू चेक. अब पहले हम बाकियों को चेक ज्यादा करते थे कि यू हैवंट डन दैट, यू हैवंट. नाउ आई थिंक सेल्फ चेक, teaching people to self check. So me, I being the senior most, so what I tell them is I'm just teaching them to do self check. I will not tell you. For example, कोई function होता है. So after the function, we all get together and we say, okay, ये duty आपको मिली थी. अपने आप को grade करो. How much do you give yourself? For example, Swati is here. She generally does the comparing. कोई भी program हो. I tell her, she'll come and ask me, ma'am, kaisa tha? How did I do? I said, don't ask me. Just close your eyes. Give yourself marks. Was it 9 out of 10, 8 out of 10, 6 out of 10? Next time, we are going to improve on that. So that is the way we perform. And मैं यहाँ से जो भी सीखा है from sir, from other masters, जितने भी senior friends हैं मेरे. So like I'm trying to incorporate that in our work. तो कल sir ने पूछा जब ये message गया आज का, he sent me a question. Which verse of the Bhagwad Gita are you living now? He says, Puri Bhagwad Gita mein se, 700 verses mein se, if we even pick up one verse and say that we are going to live this. So he asked me, which one have you started living? So I told him, आपने starting में मुझे एक बोली थी, सर्वभूते हिते रता, जो मुझे तब समझ में नहीं आई थी, and then you explained it to me. So I have written that everywhere in my diaries, and I'm trying to live that, to be of some assistance, help to people. जो मेरी position मिली है, I am in a position where I can share with people. So I'm trying to do maximum. So now self-awareness, self से self का union, self का check. This is what we are trying to do. So anyone else wants to add? If you want, I can stop the live streaming also. आप लोग बहुत शर्माते हैं.